ৰাজধানী নতুন দিল্লীত বিৰোধী ইণ্ডিয়া I.N.D.I.A সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হৈছে কিন্তু এইখিনি সময়তেই ইণ্ডিয়াৰ মাজত অৰ্থাৎ ফাট মেলাটো পৰিলক্ষিত হৈছে এনচিপিৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতা শাৰদ পাৱাৰৰ বাসগৃহত আজি সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকত প্ৰায়কেইটা দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে কিন্তু মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে বৈঠকৰ অন্তত কেতবোৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতা কেচি বেণুগোপালে জনাইছে এই সিদ্ধান্তৰ মাজত আছে নিৰ্বাচিত টেলিভিছন চেনেলৰ নিৰ্বাচিত এংকৰৰ টক শ্ব'ত এতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত কেচি বেণুগোপালে কি কৈছিল শুনো আহক decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. These are the decisions, these are the outcome of this today's আসলে ইণ্ডিয়া গঠন কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ যথেষ্ট আশাবাদী কংগ্ৰেছে আশা প্ৰকাশ কৰিছে 2024ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ পতন হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰ চোৰাত বিভিন্ন খেলিমেলি সৃষ্টি হৈছে এই সংক্ৰান্তত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন ভালকৈ চাওক দৃশ্য নম্বৰ 1 স্থান কলকাতা এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰ কাৰ্যালয়লৈ এইদৰে এখন কোলা গাড়ী আগুৱাই গৈছে গাড়ীত কোন আছে জানেনে মমতা বেনাৰ্জীৰ ভতিজা তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জী কয়লা কেলেংকাৰী সংক্ৰান্তত সোধপোছ কৰিবলৈ অভিষেক বেনাৰ্জীক এইদৰে এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰে মাতি পঠিয়াইছে বুধবাৰৰ দিন দৃশ্য নম্বৰ 2 স্থান লক্ষ্ণৌ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা আজম খানৰ বাসগৃহত বুধবাৰে এইদৰে তালাচী অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি ৰখাৰ বাবে আজম খানৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই বুধবাৰে অভিযান চলায় দৃশ্য নম্বৰ 3 স্থান বিহাৰৰ আৰা বিহাৰৰ শাসনাধীষ্ঠ জেডিউৰ উচ্চ সংসদৰ বিধায়ক ৰাধাচৰণ চাহৰ ঘৰত এইদৰে তালাচী অভিযান চলাইছে এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰে বুধবাৰৰ দিনটোতে 3 স্থানত 3টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই তিনিজন ব্যক্তিয়ে হৈছে বিৰোধী দলে গঠন কৰা ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ দলৰ প্ৰতিনিধি লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে বিজেপিৰ নিৰ্দেশত এই কাৰ্য কৰা হৈছে নেকি ইণ্ডিয়াৰ ভয়ত কপিছে নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নকলে হ'ব ইতিমধ্যে বিৰোধী দলে ইণ্ডিয়া গঠন কৰিছে ইণ্ডিয়া গঠন কৰাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে ধৰি বিজেপিৰ একাংশ নেতাই দেশৰ নাম ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছে ইয়াক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে সেইখিনি সময়তে একেদিনাই 3জন ইণ্ডিয়া দলৰ সদস্যৰ বাসগৃহত তালাচী চলোৱা ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এবাৰ আজম খানৰ ঘৰত চলা এই তালাচী অভিযান মন্ত্ৰ 3টা দিন পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপনিৰ্বাচনত আজম খানৰ দলৰ সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰি উপনিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছিল ইয়াৰে প্ৰতিশোধকল্পে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে বুধবাৰে নতুন দিল্লীত ইণ্ডিয়াৰ সমন্বয়ৰক্ষী গোটৰ বৈঠকৰ বাবে এই কাৰ্য কৰা হৈছে নেকি प्रश्न হৈছে এই বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা होगी उस पे जो एजेंडा होगा उस पे बातचीत की जाएगी तो उस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा
विपक्ष के तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना ज़्यादा होगी। ইণ্ডিয়াৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিৰ বৈঠক। শাৰদ পাৱাৰৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত বৈঠক। বৈঠকৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তৎপৰ ইডি, CBI ইত্যাদি। মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, 2 दिन बाद नहीं दे सकते थे, उसी दिन दिया जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। किस सोच के साथ दिया? क्योंकि ईडी भी राजनीतिक सोच के साथ आगे चल रहा है। और घोसी हारे तो आजम खान के ऊपर छापा, समाजवादी जीती तो आजम खान के ऊपर छापा। तो ये तो इनका पॉलिटिक्स ही है कि एजेंसीज को के द्वारा आप लोगों को गिरफ्तार करो और फिर भाषण दो, और फिर ऐसा भाषण दो जो विवादित भाषण हो, और जो बाहर के लोग आए हैं उनको कहो कि देखो हिंदुस्तान कितना डेमोक्रेट है। हम तो अकबर की बात करते हैं, कितना बड़ा डेमोक्रेट था। ইণ্ডিয়াক লৈ বিৰোধী পক্ষ যথেষ্ট আশাবাদী। বিৰোধীৰ ধাৰণা ইণ্ডিয়াই এবাৰ প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। শেহতীয়া উপ নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ দলে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত মনোবল অধিক বৃদ্ধি পাইছে ইণ্ডিয়াৰ। কিন্তু এইখিনি সময়তেই ইণ্ডিয়াৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে অথন্তৰ। মিত্ৰদল DMKৰ ফালৰ পৰা ঘনে ঘনে বিতৰ্কিত বাৰ্তা। DMK নেতা উদয়নিধি ষ্টেলিনৰ মতে সনাতন ধৰ্ম হ'ল ডেংগু, মেলেৰিয়াৰ দৰে। DMKৰ নেতা ৰাজাৰ মতে সনাতন ধৰ্ম হৈছে এইডছৰ দৰে ভয়াৱহ। তামিলনাডুৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মতে ইণ্ডিয়া গঠন কৰা হৈছে সনাতন ধৰ্ম শেষ কৰাৰ বাবে। এনেবোৰ সময়ত হাৰিয়ানাত বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ দল। হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব আপে, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ দল হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু আপ। कि हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, तो पार्टी अब नेशनल पार्टी है, सारे स्टेट्स में संगठन बना रही है, तो निश्चित रूप से हरियाणा की भी नंबर लगा है। तो हरियाणा में संगठन बना रहे, एक एक गांव में संगठन बना रहे, सर्कल लेवल तक हमारी संगठन बन चुकी है। अब अगले लगभग 10-15 दिन में एक एक गांव में हमारी सारी कमेटी कंप्लीट हो जाएगी, और कमेटी कंप्लीट होते ही फिर हम कैंपेन शुरू कर देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि हरियाणा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। सभी सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে কৈছে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিভিন্ন বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে যদিও কাৰ্যত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, কিয়নো ইণ্ডিয়াৰ অধীনস্থ দলবোৰৰ মাজত আছে তীব্ৰ সংঘাত। पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वही ना निर्णय करती हैं, बैठे लोगों को निर्णय का तो अधिकार नहीं है। ललन जी बाद में जाकर नीतीश जी से पूछेंगे, अभिषेक बनर्जी बैठक में आ नहीं रहे हैं, CPM ने अभी तक अपना कोई नॉमिनी जो है उसके लिए सुपुर्द नहीं किया है, तो केवल शरद पवार और हेमंत सोरेन और MK स्टालिन ये 3 लोग हैं। तो अगर शरद पवार हैं तो उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं है? तो इसलिए इनको लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी को दिखावे के लिए कमेटी है, और इस सीट शेयरिंग पर ही क्या निर्णय कर सकते हैं? सीट शेयरिंग तो राज्यों के अंदर होना है ना, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तो सीट शेयरिंग हो नहीं सकती है। अब बंगाल में क्या सीट शेयरिंग करेंगे? अभी चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, CPM कांग्रेस के ज्वाइंट उम्मीदवारों को 13,000 वोट आया, बुरी तरह से हार गए। केरल के अंदर बाई इलेक्शन में कांग्रेस और CPI एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो सीट शेयरिंग तो ये इस तरह की बैठकों में कर ही नहीं सकते। बहुत होगा तो कोई रैली वगैरह तय कर सकते हैं कि साहब यहाँ रैली करेंगे, वहाँ रैली करेंगे। बाकी जो 4 कमेटी बनी, अभी तक ममता बनर्जी ने 4 कमेटीज में कहीं भी अपना नुमाइंदा जो है अभी तक नहीं दिया। क्या कारण है? और अब तो झगड़ा शुरू हो गया प्रधानमंत्री पद को लेकर। कल ललन सिंह ने एक सभा के अंदर बाकायदा उनका बायोडाटा रिलीज किया, नीतीश कुमार का, इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार हैं, फलाना है, इनको जो है अलायंस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। उधर ममता बनर्जी के लोग ममता बनर्जी का नाम फ्लोट कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग बाकी कर रहे हैं। तो पहले तय तो करें कि उनके प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन हो। বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ পিছতো ইণ্ডিয়াৰ মিত্ৰজোঁট আশাবাদী। মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ দলে ভাবে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে। पार्टियां समझ गई है हम इकट्ठा रहना है, और इकट्ठा रहना है तो जिस दिन यहाँ मुंबई में जो हमारा इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में माननीय आदित्य जी ने जो प्रस्ताव पारित हुए थे वो सबके सामने रखे थे,
उसमें उन्होंने आदित्य जी ठाकरे ने कहा कि इसमें दूसरा प्रस्ताव तो ये था कि भाई सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए अभी, तो हो सकता है उसको लेकर एक कदम आगे बढ़ेंगे वो लोग। ये सारे चीजों और मुद्दों पर चर्चा होगी, जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं उन चीजों पर भी डिस्कशन होगा, लेकिन समय आने पर हर चीज का जो है खुलासा होगा, सब बताएं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब लोगों से बात करके कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी को इतना डर लग रहा है तो फिर उन्होंने अपना काम करना चाहिए। बीजेपी ऐसा सोचती है कि वो मतलब उनको कोई हरा नहीं सकता, तो फिर डरती क्यों है? इंडिया अलायंस जो है अपना काम कर रही है, देश को जोड़ रही है, हम सब मिलकर जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया हमारा नारा है, वो इस तहत पे हम काम करेंगे। और सबसे 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও কিছুদিন বাকী আছে। এইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়াৰ মাজত ভাঙোন ধৰে নেকি বুলি প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল বিজেপিয়ে ইণ্ডিয়াক যিমানেই সমালোচনা নকৰক কিয় বিৰোধী দল এতিয়া যথেষ্ট আশাবাদী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ।